बैक टू शोमेन नाथ्स यूट्यूब चैनल। जिस न्यूज़ के बारे में बात करने के लिए हम आज यहाँ पे आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं वो है कि ऑल ऑफ़ यू आर वरीड अबाउट योर एग्जामिनेशन and when the examination will come. This is the question you are having in your mind, when the notification will come and when you will get relieved from this mental pain and mental agony. This video is specifically meant not to create any kind of mental pain or agony, but to give you some kind of relief from those problems. So watch carefully. See, though it is in Bengali, let me show you. It is published in published in Anandabajar Patrika and read paper at anandabajar.com. This is the e-version of the Anandabajar Patrika, Friday 17th April 2020, where it is clearly mentioned in this particular part that let me zoom this part. ইউজিসি আর মমতা জোড়া নির্দেশে ধন্দ. That means what? I'm telling you not to create any kind of confusion, because the next part, let me zoom it. I'll translate it English as well as in Hindi. I have taken that part only. Like the last part, as you know, all of the students will get promoted, means final year student except the final year students etc. ये जो पहले ही हमारे सीएम ने मेंशन कर दिए थे, तो उसके बारे में एक बात पूछा गया था कि यूजीसी जो है और एआईसीटी जो है वो हाईएस्ट बॉडी है. कल मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें भी वो मेंशन किया हुआ था कि क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा, और वो सारे यूनिवर्सिटीज़ जो हैं और एआईसीटी कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, उसको एआईसीटी ने भेजे हैं. अभी यूजीसी का जो कमेटी फॉर्म हुआ है एग्ज़ाम कैसे होगा इसके ऊपर, तो 2 कमेटी फॉर्म किया था यूजीसी ने एक साथ. एक कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट कर दी है 13 अप्रैल को, और दूसरा कमेटी आज यानी कि आज के डेट पे 17 तारीख को अप्रैल का रिपोर्ट सबमिट करने वाले हैं. तो अभी क्वेश्चन आता है, उससे पहले बुधवार को यानी कि जो चला गया, यानी कि लास्ट जो वेडनेसडे था, वहाँ पे एक अनाउंसमेंट हुआ है राज्य सरकार की तरफ से कि जो लोग आप जानते हैं, जैसे कि एक सेमेस्टर करके आगे हो जाएगा और फाइनल ईयर जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों का एग्ज़ाम होगा. लेकिन कैसे होगा, कब होगा, उसके बारे में कुछ नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी की तरफ से, सिर्फ मकाउत नहीं, कोई भी यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी तक नहीं आया है. तो मेरा रिक्वेस्ट ये है आप लोगों से, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে ইউজিসি তাদের কমিটি রিপোর্ট প্রকাশ করলে তার সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ না মিললে কী হবে, সেই বিষয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে রাজ্যের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে. তবে শিক্ষা প্রশাসকদের কেউ কেউ আশা করছেন মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণার সঙ্গে হয়তো ইউজিসির সুপারিশের খুব বেশি ফারাক থাকবে না. আই রিপিট, মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার সঙ্গে হয়তো ইউজিসির সুপারিশের খুব বেশি ফারাক থাকবে না, which means that many of the experts are believing that there will be no such difference or very less amount of difference, or maybe no difference at all will be there between our respected chief minister's announcement regarding examination and promotion, as well as UGC's recommendation and AICT's recommendation. So students, please stop worrying. और इसके बारे में जो लास्ट
बोला गया है, when they asked about our education minister Partho Chattopadhyay, he replied, ইউজিসির ওই কমিটি সুপারিশ এলে তখন দেখা যাবে, এদিন বলেন পার্থবাবু। means our education minister for state, Mr. Partho Chattopadhyay, Dr. Partho Chattopadhyay, he told specifically that let the report come and then we will check it out. But as the experts, those who are experts in this particular field, they are repeatedly saying that there are no such differences. Maximum, they say, they are also talking about probability, but they are emphasizing on this that there will be no such huge difference or big difference between the chief minister's decision as well as UGC and the ICT decisions. So in a nutshell, what we can say that students, under any circumstances you need not to worry, because whatever the decision will be taken, it will go in your favor and taken under considering the situation of the country as well as all of your mental state. So it will be for your benefit, it will be for your good only. So stop thinking about it right now. This is my request to all of you, and please don't believe in any kind of gossip. So now, yes, there is only one pen, that is you have to wait. Universities are also waiting for UGC's report to come. That you need to understand why they are not publishing any notice, because this report, then they will publish their report. Universities will let the UGC report come, and then the university, state universities specifically, they'll discuss with state government, and then they will publish the notice. So till now you have to wait, and that period you enjoy your time. Don't worry, because once the date for the examination was announced, you have to study again. So till, though you are studying, I know, but please enjoy and get yourself relieved from this mental pain and agony. I hope all of you understand. So thank you very much. If you like this, do subscribe Shomennath YouTube channel, and I hope you will have your mental peace and keep up the spirit high. Whenever the notification will come, I'll let you know. Thank you very much.